Hello Gaurav, hello Mullivashi, hello hello Rahi, hello Gurnur, hello Antara, hello, good morning. Hello everybody and welcome to the Hindu editorial analysis. Good morning to all of you all. So today we are going to be doing the Hindu editorial analysis of the 27th of March. That is today. बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? Okay, I think I've got some. Vindhya, hi. Good morning. Antara, hello. आप भी बढ़िया. Okay. Vandamashi, good morning. Good morning. All right, so let's get started with the editorial. Ugh. So, are you ready for the 27th of March? बहुत easy vocabulary आज के editorial का and बहुत easy सा है तो फटाफट खत्म हो जाएगा. Oh God, what is your problem? All right, Gaurav. Okay. How would I know? You're laughing. How would I know? How would I know? I'm just reading the name that is given over there. Shanu, hi, good morning. Shanu, I forgot the name that you said that you have sent me a request on by. Can you please just tell me the name again? All right, so let's get started with the editorial. Before we get started with the editorial, this is my Telegram channel, or it is called Unacademy underscore Vaishnavi underscore CLAT. Please join the channel because a lot is will be happening from April onwards on this channel. And the happenings of my classes, apart from a few days, the happenings of my classes, uh, you will get to know on the channel. Apart from few days, again, you will get to answer some quiz questions on idiomatic expressions and phrasal verbs that are given that very day. Okay, so please join the channel. Okay. All right, so let's start making sentences, you guys. Let's start making sentences. Gurnoor chala gaya kya? Very simple, easy words. बहुत ही simple, easy words हैं. Okay. So the first word is resolution. Okay. Okay. The first word is resolution, which is a noun. Okay. Resolution is a noun. जिसका मतलब होता है नहीं नहीं राही. It is just for today and probably few days. Okay. Few other days, but not a daily thing. All right. Daily 12 बजे ही होगी. तो सबसे पहला word है resolution, which means a firm decision to do or not to do something. Okay, so this is my resolution. That means this is what I've decided on doing, or this is what I've decided on not doing. Okay, so the resolution is the first word. Then we have ceasefire. Ceasefire is a very common word. अभी आप बहुत ज़्यादा देखोगे since we are talking about war between Israel and Palestine. Ceasefire is a very, very important word and it is a high frequency word.
जिसका मतलब होता है टेम्परेरी भी हो सकता है या तो परमानेंट भी हो सकता है, स्टॉपेज ऑफ वॉर। ओके, सो वॉर का टेम्परेरी रुकना ताकि पीसफुल डिस्कशंस हो सके, या परमानेंटली रुकना इज सीज फायर। ओके, देन वी हैव असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, battery and assault. Okay, assault is make a physical attack on. Okay, so assault is a verb जिसका मतलब होता है आप किसी को physically attack कर रहे हो, तो you have assaulted that person. Okay, hi Shita, hello Kev, good morning, good morning, good morning. सुबह सुबह ये क्या हुआ? Yeah, 12 o'clock is not possible for me today, so I'm just taking it at 9. 10 o'clock is not possible from One Academy's side because another educator is taking session at that time. So 9 is the time that I got. So 9, I took it. Good job, Ishita. Good job. Good job. Then we have devastating. Devastating is also a word जिसका मतलब आपको पता होगा. देखो ये ing use हो रहा है, फिर भी ये adjective है. Okay, devastating मतलब something that is highly destructive or damaging. Okay, so devastating attack, devastating results. Okay, or devastating career option. Okay, so devastating is something that is highly damaging, or devastating relationship, could be anything. Okay, so devastating के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं जो भी destructive है, बहुत ज्यादा destructive है या बहुत ज्यादा damaging है. Okay, आज से शानू आज से होगा quiz. Okay, you will have quiz from today onwards. Okay, I will just finalize the schedule with the team and then I will let you know on the group itself. Okay, आज होगा quiz. Then we have hostage. Hostage का भी मतलब आपको पता ही होगा already. Hostage is basically a noun जिसका मतलब होता है एक person. Singular है hostage, hostages is plural. So अगर singular की बात करें तो एक person seized or held as security for the fulfillment of a condition. Okay. So कोई एक ऐसा इंसान जिसको पकड़ के रख लिया जाता है. Okay, किडनैप कर लिया जाता है, या पकड़ के रख लिया जाता है. ओके, जब तक उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है तब तक उनको कैदी बना के रख लिया जाता है. ओके, सो कोई कंडीशन या डिमांड जो भी उनके होते हैं वो अगर नहीं फुलफिल होते हैं तब तक उनको पकड़ के रखा जाता है. सो हॉस्टेज. ओके, सो हॉस्टेजेस, इट कैन बी मोर देन वन हॉस्टेज एज वेल. Then we have veto. Okay, veto is a verb over here. जिसका मतलब हो गया, देखो veto can be noun or verb. Okay, veto over here is to refuse to allow something. Okay, is the verb. So vetoed. Okay, that means refused to allow something. Okay, अगर कोई मना कर देता है कोई चीज allow करने से, so he has vetoed. Okay, generally the people who have the veto power, obviously. Okay. Then we have abstain. Abstain का मतलब क्या होता है? Is a verb which means to restrain oneself from doing or enjoying something. Okay, abstain from drinking alcohol. Okay, so restrain oneself from drinking alcohol. Abstain oneself from lying. Okay, so that is also, all these are part of Ramadan. Okay, so abstain from. Okay, so restrain oneself from doing or enjoying something. Okay, restrain oneself from doing or enjoying something. Okay, then we have conditioning. Sentences, guys, sentences. I don't see anyone making sentences. Come on. Conditioning क्या मतलब होता है? It is a noun जिसका मतलब होता है अगर किसी को किसी की कंडीशनिंग की जाती है ing होने के बावजूद. ओके, किसी की कंडीशनिंग की जाती है, devastating statements of her that hit like an atomic bomb on relationship. You can start with, this looks like an incomplete statement, so you can say her devastating statements was sorry, hit me like an atomic bomb, or was like an atomic bomb on our relationship. Very nice, Kev, good job. All right. um, Now we have the conditioning. Okay, conditioning is the process of training or accustoming
A person or animal to behave in a certain way or to accept certain circumstances. Okay, to behave in a certain way or accept certain circumstances is conditioning. Okay. गुरनूर कहाँ चले जाते हो भाई? फिर आ जाते हो, फिर चले जाते हो. I was wondering where you left, where you went. All right, outburst is the next one. गौरव गुरनूर, मैं जिम में था, अब घर हूँ. आपने जब हाय भेजा तब आप जिम चले गए थे क्या? तो आपने बेसिकली 10 मिनट जिम किया. बस आपको बताना था कि आप जिम में थे. Okay. Now, outburst is very nice. What dedication, गुरनूर. फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का आप ध्यान रख रहे हैं. वाह वाह, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है. हाँ हाँ गुरनूर, we got it. You go to the gym to work out. Yes, yes. Outburst is the next word, which is a noun. Okay, जिसका मतलब होता है sudden release of strong emotion. Okay, a sudden release of strong emotion is an outburst. Okay, a sudden release of an outburst, sudden release of strong emotion is an outburst. Okay. All right, so then we have so outburst, his sudden outburst or his outburst turned into an umbrage, okay? Turned into a rage or an umbrage after seeing that no one is listening, okay? Or his outburst was justified, uh, his outburst was justified, or his outburst led to fissure in their relationship, okay? Fissure भी word है जिसको हम देखेंगे next, okay? Then we have cramped. Cramped is an adjective. Okay, cramped का मतलब क्या होता है? Limited in freedom to move because there is not enough space. Okay, so cramped is when आपको एक जगह पे जबरदस्ती, like buses में आप देखोगे people are cramped in buses and trains में देखोगे generally या sleeper compartments में देखोगे people are cramped over there. Okay, या metros में देखोगे people are generally Delhi metros में देखोगे people are cramped in there. मुंबई के लोकल ट्रेन्स में देखोगे पीपल आर क्रैम्प्ड इन देयर. ओके, सो क्रैम्प्ड इज बेसिकली जबरदस्ती घुसेड़ देना. ओके. To abstain from social responsibilities could make us arrogant, or abstaining from social responsibilities could make us arrogant. Very nice, Kev. Good job. Only Kev is making sentences. Rest all of you are just looking, just here to mark your attendance. Ma'am, outburst. इमोशंस विक्ट्री नहीं नहीं नहीं. आउटबर्स्ट का मतलब होता है अचानक से फट जाना. ओके, बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल इमोशन से ही रिलेटेड होता है हमेशा. सडनली अगर आप एंग्री हो जाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ जाए, ओके, आप या कोई चिल्ला दिया सडनली, ओके, सो दैट इज एन आउटबर्स्ट. ओके, सडन suddenly getting angry, okay, is an outburst. नहीं नहीं दिख रहा. हाँ, गुरनूर, ऐसे सेंटेंसेस क्यों बनाते हो? Okay. Now, the last word on this page is offing. Okay, offing is a noun जिसका मतलब जिसको हम generally ऐसे use करते हैं, in the offing. Okay, in the offing. Okay, not
I was offing the light, okay? You cannot use it that way, okay? Switching on and switching off the light, okay? It is not the same as offing the light, okay? So that is wrong, wrong English, okay? So here offing is in the offing, jiska matlab hota likely to happen soon, okay? Likely to happen soon is offing, okay? So the words that we saw are resolution, ceasefire, assault, devastating, hostage, veto, abstain, कंडीशनिंग आउटबर्स्ट क्रैम्प्ड ऑफिंग जिसको जनरली हम कैसे यूज करते हैं इन द ऑफिंग then we have solidarity okay solidarity is the next word which is a noun solidarity का मतलब होता है agreement between and support for the members of a group especially a political group okay तो agreement या support जो एक group में होता है okay एक agreement या support जो एक group में होता है that is called a generally political group that is called my birthday will be the offing next month. Will be the offing next month. In the offing next month. Oh, Gurnur seems very excited about his birthday. Is it on 1st of April, Gurnur? I'm kidding. Okay, solidarity का मतलब क्या होता है? Agreement between and support for the members of a group, especially a political group. ये ऐसे सेंटेंस बनाने का मन नहीं करता फिर भी बनाना पड़ता है गुरनूर दिस इज द नॉर्मल वर्ल्ड नॉर्मल where normal people are having a normal educated discussion okay okay so let's not spoil everybody's morning okay by making gory sentences okay good boy our exams are in the offing very nice very nice Antara very nice selection of my result clearance is ready to offing is in the offing okay selection of my result clearance is in the offing okay very nice very nice very nice Shanu good job good job just a word of encouragement so that you don't stray from the path come to the light side leave the dark side okay this is the way rubble is noun okay rubble is noun जिसका मतलब होता है pile of broken stones and bricks etc that are left when a building falls down or is destroyed okay so rubble is basically अगर किसी चीज की तबाही हो जाती है किसी बिल्डिंग की okay किसी बिल्डिंग की या घरों की तबाही हो जाती है तो लास्ट में जो धूल मिट्टी और टुकड़े बचते हैं स्टोन्स के that is called a rubble okay then we have fissure okay fissure का मतलब क्या होता है fissure is a deep crack okay deep crack okay deep crack okay it is a deep crack ठीक है a deep crack especially one in rock or ice or in the ground okay so that is a fissure okay you see this deep crack it is called a fissure okay this is called a fissure Alright, next is battered. Okay, battered, red use हो रहा है. Still, it is an adjective. Okay, adjective है. Hurt by being repeatedly hit. Okay, किसी को मार मार के उसका भूत बना देना is to batter someone. Okay, so his face was left battered. Okay, that means his face was hit repeatedly and hence he was hurt. Okay. Then we have the next word and the last word, besiege. Okay, besiege is the last word, which is a word जो हमने probably पहले नहीं देखा है. Besiege is a verb, okay, which means to surround a place,
especially with an army, to prevent people or supplies getting in or out. हमने देखा है besiege, okay? Besiege एक ऐसी एक काम करना होता है, बेसिकली किसी जगह को घेर लेना होता है ताकि वहां की आर्मी ताकि मतलब आर्मी घेर लेती है ताकि लोगों को वहां के जो मासेस हैं उनको सप्लाईज ना मिल पाए, सप्लाईज आ ना पाए, सप्लाईज वहां से जा ना पाए. Good morning, Vaishnavi ma'am. As per your instruction, during the inaugural session of the Lot Twilight batch, students are required to engage in daily reading of the Hindu editorial and dedicate 30 minutes to the reading of novel. Very nice. Yes, you are. My query is whether the editorial reading should be consecutive, meaning immediately following watching the editorial. No, not necessarily, Krishna. Not necessarily. Okay, it can be in any order. Okay, it can be right back, right. It can be back to back. Okay, where you are watching the session, and then reading the editorial, or reading the editorial and watching the session after that, or it can be like you can be watching the editorial in the morning and you can be reading the editorial at night. Whenever you have time, is what I'm trying to say. Okay, so it is not something that has to be followed. Okay. Ma'am, ये बना दूं deep dark fissures in my heart. Okay, Krishna, thank you for asking this, Krishna. Yeah, proceed with reading the novel for 30 minutes, okay? And it's not that if you want to read more, if you have more time, you can definitely go on reading with it, but at least 30 minutes is what I'm saying, okay? Shanu. Jeff, in a in and lecture to nahi hoga, in a lecture, okay? In a lecture of Arundhati Roy, I will be capitalized. I and a lot of my friends and I were standing with solidarity with recently detained students. In solidarity, standing in solidarity with recently detained students, comma, no comma, no full stop. On that particular lecture, Mrs. Roy's outburst, okay? This is noun, okay? तो इसको आप ed form में नहीं convert कर सकते, ठीक है? Recently detained students, detention students, okay? Outburst her feeling against unlawful detention, okay? Mrs. Roy had an outburst about or for the unlawful um detention, against the unlawful detention, okay? All right, good job, Kev, good attempt, very nice, good job. All right, so these are the words: solidarity, rubble, fissure, battered, and besiege, okay? Now, level up your preparation with this festive season. 20% off मिल रहा है, plus 2 months आपको extension मिल रहा है with CLAT Plus subscription. This is the amount you're saving. This is the discounted price. You can use my code Vaishnavi10 to enroll in this batch. Enroll with plus subscription. This offer is valid till March 28th. Unlock period चल रहा है, guys. Festive season चल रहा है. 20% off is here. So do enroll. And if you want more discount, you can use my code Vaishnavi10 to enroll. Okay, to get maximum discounts. CLAT Iconic के साथ भी same offer available है. Again, this is the amount that you're saving. This is the discounted price, and this is the amount that you're saving. This offer is valid till 28th of March. Use my code Vaishnavi10 to get maximum discounts upon enrollment. Okay.
Law Twilight is an evening batch for CLAT, ALET, जिसके बारे में कृष्णा भी बात कर रही थी. CLAT, ALET and other law exams for 2025. I'm taking English language in this batch, so you can use my code Vaishnavi 10 to enroll in this batch with your iconic or plus subscription. Last Mile batch is another batch for MHCT, CUET, LLB and other LLB exams for 2024. I'm taking English language in this batch as well. So you can use my code to enroll in this batch. I'm right behind myself. Legal Maverick batch is a batch for CLAT, MHCT or ALET and other LLB exams for 2026. 2026 के लिए you guys, 2026 के लिए जैसे हमारे पास ACE Legal batch था which was for 2025. In the same way we have another batch that is starting for 2026. Sorry, that was for 2024. No, 2025, I'm right. So this is another batch starting for 2026. I'm taking English language in this batch as well, right behind myself. You can use my code Vaishnavi 10 to enroll and get maximum discount, either by plus or iconic subscription. CLAT 2025 Premium Capsule has printed notes along with 50 mock tests. These are curated by top educators. Printed study materials will be delivered right at your doorstep, and there will be pack of 50 test series जिसमें 40 CLAT होगा, 6 ALET होगा and 4 OLETs होगा. This is available at a discounted price of 9,999 only. Standard capsule is another capsule which has a discounted price of 6,499. बस फर्क ये है कि it is digital notes and rest everything remains the same. CLAT 2025 assure is an assurity from our side that till you clear CLAT, हम आपके साथ हैं. These are the terms and conditions, and this offer is valid till March 31st. Very nice offer. Please make sure that you enroll. All right, let's start with the editorial. Pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Taylor Swift is always besieged by a lot of fans. Very very nice, Kev. Very nice, very nice. Very creative way of using besiege. Oh, Krishna is a okay, sorry. Ma'am, ye okay, no, sorry. Or is there flexibility in scheduling them separately? Okay, okay, okay. No, good note. Not now. I'm not going to look at it. So pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Let's get started. Stop the war. Okay, this is the title given. Israel must heed मतलब सुनना चाहिए इसराइल को किसकी यूएनएससी रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास किया है ओके फॉर अ सीज फायर ओके उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया है कि सीज फायर होना चाहिए और इसराइल को मान लेनी चाहिए ये बात ओके दिस इज द कंक्लूजन so let's start with the main idea no no not at all 5.5 months after Israel's assault on Gaza began, in which 32,000 Palestinians have been killed, another 74,000 74,000 injured, sorry, 74,000 injured. Okay, more than 90% of the enclave's population displaced, and nearly all of them pushed into a devastating hunger crisis. The UN Security Council, that is UNSC, on March 25th called for an immediate ceasefire and release of all hostages held by Hamas. Okay, now, so basically, this is the main idea. Okay, this becomes the main idea. Main idea क्या है? दैट कितने मंथ्स हो गए हैं 5.5 months हो गए हैं जब इसराइल
ने असॉल्ट किया था गाजा पे, ठीक है, जिसमें 32,000 पैलेस्टीनियंस की मौत हो गई है और 74,000 हैव बीन इंजर्ड। 90% ऑफ द इनक्लेव पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड, अपने घर छोड़ के उनको जाना पड़ा है, ओके, दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ लिविंग, and nearly all of them pushed into a devastating hunger crisis, और almost सब के सब एक hunger crisis में फंस गए हैं, okay? तो दिस इज द सिचुएशन, बहुत बुरी हालात है, बेसिकली यही पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 मार्च को क्या कहा कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए ये वॉर, जिसमें और किसमें हॉस्टेजेस को रिलीज कर देने चाहिए, हमास को सारे हॉस्टेजेस को रिलीज कर देने चाहिए, ओके। Now, this is the main idea, okay? This is what the author is going to be talking about, and this is what is going to be discussed in details, okay? The United States, which has vetoed every UN resolution earlier that called for an immediate ceasefire in Gaza, abstained this time, signaling a change in the Biden administration policy towards the war, okay? So, यूनाइटेड स्टेट्स जो अब तक सारा यूएन रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया, ओके, वीटो कर दिया है, जब भी इन्होंने इमीडिएट सीज फायर बोला है गाजा को, ओके, इस बार उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है इस चीज पे, कोई बेसिकली ना ही दे हैव वीटोड फॉर इट और अगेंस्ट इट, ओके। सो ये दिखाता है कि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी दूसरा हो रहा है वॉर की तरफ, ओके। ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी इंक्लूडिंग ब्रिटेन, which until recently had resisted calls to back a ceasefire, voted for the resolution, okay? So अब सबने, almost सबने, excluding US, okay, ब्रिटेन इंक्लूडिंग, अभी तक ब्रिटेन भी नहीं बैक कर रहा था ये सीज फायर को, लेकिन इस बार उन्होंने वोट किया है फॉर द रेजोल्यूशन, ओके, जो यूएनएससी ने रेजोल्यूशन पास किया उसके लिए वोट किया है, ओके, दैट मीन्स एवरीवन इज फॉर द रेजोल्यूशन पास बाय यूएनएससी, ओके। The resolution was taken by the army personnel to cease fire the war so that to abstain from assaulting the hostages that had been battered by the terrorist group. This is very devastating to this is very devastating for the Indian government. Okay, very nice, right? Good job. I should be capital. Okay, Indian government. अब इसराइल ने रिस्पॉन्ड किया इस चीज पे, ओके, इसराइल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्डेड एंग्रीली, ओके, गुस्से में रिस्पॉन्ड किया है, और उन्होंने कैंसिल कर दिया विजिट ऑफ द टू प्राइम मिनिस्टर्स बेंजामिन नेतन्याहू, क्लोज Netanyahu's close cabinet aids to Washington and backed by China and Russia, blasting the resolution for not conditioning a ceasefire on the release of hostages. Okay, तो इन्होंने angrily respond किया इस पूरे चीज पे, okay, जब इनका जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू का क्लोज कैबिनेट एड्स टू वॉशिंगटन जाना था, ओके, जो कि इन्होंने कैंसिल कर दिया है, ओके, कैंसिलिंग अ प्लान्ड विजिट ऑफ द टू प्राइम मिनिस्टर, ओके, इन दोनों का प्लान विजिट होने वाला था, ओके, बेंजामिन नेतन्याहू एंड बाइडेन का मीटिंग होने, तो उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया है, एंड backed by China and Russia, blasting the resolution for not conditioning a ceasefire on the release of hostages. Okay, so इन्होंने क्या किया है, रेजोल्यूशन को के बारे में बहुत बोला है कि रेजोल्यूशन बेसिकली एंग्रीली रिप्लाई किया रेजोल्यूशन के बारे में कि इट इज not conditioned, the ceasefire is not conditions for the release of hostages, okay. But beneath the anger and outburst lies Israel's weakness, okay? और ये जो anger और outburst है इसके नीचे, okay? अगर ये ऊपरी लेयर है तो इसके नीचे क्या है, उनका weakness lie करता, okay? Israeli leaders have repeatedly said in recent weeks that an invasion of Rafah, the southernmost town, was some 1.4 million Palestinians have been crammed into, was in the offing, okay? तो ये है इनका वीकनेस, ओके, दिस इज द वीकनेस, ओके। राफा में क्या हुआ है, रिसेंट वीक
इन्वेजन हुआ है राफा का, ओके, द साउथ सदर्न मोस्ट टाउन जो है जहां पर 1.4 मिलियन पैलेस्टीनियंस को क्रैम्प किया गया है इनटू द वाज इन द ऑफिंग, ओके, अब आने वाला है, ओके। It would be highly inappropriate after 14 members of the UNSC called for an immediate ceasefire for Israel to launch an attack on Rafah, which could end up in another bloodbath. Okay, तो अब ये बहुत ही disturbing होगा कि अगर 14 मेंबर्स, यूएनएससी के 14 मेंबर्स ने इन्होंने कह दिया है कि सीज फायर करो भाई, और उसके बाद इसराइल लॉन्च कर देता है राफा पे अटैक, ओके, that would end up in bloodbath and it would be really devastating for Israel. Okay, it would not look good for Israel. Okay, जब उनको वार्निंग दे दी गई है कि सीज फायर करो, फिर भी अगर ये एक्शन लेते हैं, okay, तब it would be sorry, नहीं देखूंगी। The latest war was triggered by Hamas's October 7th cross-border attack, where, where at least 1,200 Israelis were killed. Okay, तो ये ट्रिगर कैसे हुआ, ये स्टार्ट कैसे हुआ ये वॉर, जब हमास ने अक्टूबर 7th को, ओके, 7 अक्टूबर को क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था जिसमें 1,200 इजरायलीज मारे गए थे, ओके। Israel had the sympathies and solidarity of the world. उस टाइम इसराइल के साथ पूरा दुनिया था, उनके पास सिंपैथी थी पूरी दुनिया की, ओके। लेकिन but what Israel did in subsequent months was to punish the entire population of Gaza for what Hamas did, which turned international public opinion against it. Okay, तो लेकिन जो इजराइल गवर्नमेंट ने जैसा रिटेलिएट किया, जिसमें इन्होंने पहले तो पूरा दुनिया इनके साथ था, पूरा वर्ल्ड इनके साथ था, लेकिन जब रिस्पॉन्ड किया, ओके, जब इन्होंने रिस्पॉन्स दिया इस अटैक का, और जो इन्होंने किया, ओके, गाजा को पूरे पॉपुलेशन को जिस जिस तरह से इन्होंने पनिश किया, ओके, फॉर हमास, ओके, हमास ने जो किया उसके लिए पूरे गाजा को जैसे पनिश किया, अब पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट खड़ी हो गई, ओके। If Israel makes an objective assessment of the situation, it should immediately abide by UNSC resolution and declare a ceasefire. अगर इमोशंस में ना बहते हुए इसराइल एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन, रैशनल डिसीजन बनाती है, तो इनको यही होगा इनका रैशनल डिसीजन कि अबाइड करे यूएनएससी के रेजोल्यूशन के साथ, ओके, और डिक्लेयर कर दे सीज फायर, ओके। The October 7 attack itself was a massive intelligence and security failure for which Mr. Netanyahu शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। ये जो अक्टूबर 7th में जो अटैक था वो खुद ही एक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का फेलियर था, ओके, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए मिस्टर नेतन्याहू को, ओके। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि इनकी गलती थी, इनकी लापरवाही थी इसमें, ओके। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, और ये ना करते हुए, ओके, ही वेंट टू वॉर विथ फुल फोर्स विदाउट प्रॉपर अचीवेबल टारगेट्स, ओके, और ये ना करके ये पूरा वॉर पे निकल गए, ओके, फुल फोर्स के साथ वॉर पे निकल गए, और कोई टारगेट, अचीवेबल टारगेट इन्होंने दिमाग में नहीं रखा था कि ये टारगेट है हमारा कि प्रोबेबली इतने हमास को मारेंगे, या इतने लोगों को मारेंगे, या ये जगह ऑक्यूपाई करना है, कुछ नहीं था, ओके। कोई इनके पास अचीवेबल टारगेट नहीं था, बस ये सीधा वॉर पे निकल गए, ओके। After months long fighting, Israel has turned much of Gaza into rubble, but has neither destroyed Hamas nor rescued hostages. Okay, इतने लंबे समय तक ये लड़ रहे हैं इसराइल से, ओके। इसराइल लड़ रहे हैं गाजा से, ओके, और पूरे गाजा को इन्होंने तबाह कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया, ओके, और लेकिन अभी तक इनका कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ, इनका कोई अचीवेबल टारगेट नहीं इनको मिला है, ओके। ना ही ये डिस्ट्रॉय कर पाए हमास को, ना ही ये रेस्क्यू कर पाए हॉस्टेजेस को, ओके। द प्रोलॉन्ग्ड वॉर हैज क्रिएटेड फिशर्स, ये दरार ले आया है किसमें, नेतन्याहू कैबिनेट में, ओके। द प्राइम मिनिस्टर इज इमेंसली अनपॉपुलर, और इनकी अनपॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है
and his collision partners, और ये जिनके साथ पार्टी मिला के बनाए थे, are at war with one another. ये सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं. Okay, the war has also increased Israel's isolation, with tension rising in its ties even with its close partners including the US. Okay, तो पहले US का क्लोज टाई था इसराइल से, अब ये टेंशन क्रिएट कर रहा है, नॉट जस्ट विथ बिटवीन इनसाइड इसराइल, बट इट इज आल्सो क्रिएटिंग टेंशंस आउटसाइड इसराइल. इसराइल का रिलेशनशिप बर्बाद कर रहा है दूसरे देशों के साथ. ओके, स्पेशली इंक्लूडिंग इनके जो क्लोज रिलेशनशिप थे यूएस के साथ, वो भी बर्बाद हो रहे हैं. इफ इसराइल कंटिन्यूज द वॉर विथ नो क्लियर एंड इन साइट, अगर ये ऐसी कंटिन्यू करते रहते वॉर विदाउट एनी क्लियर एंड इन साइट, ओके, मतलब कोई अगर इनका अचीवेबल टारगेट नहीं है कि कहाँ पहुंचना है, वेयर डू दे हैव टू गो, व्हाट इज द व्हाट व्हेन विल दे फाइनली एंड द वॉर, इफ दिस हैपेंस दे विल एंड, कोई कंडीशन ही नहीं रखा है, अगर ऐसे ही चलते गए, इट विल ओनली वर्सन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल चैलेंजेस इट इज फेसिंग, besides killing more Palestinian in the defenseless, battered, besieged, bombed out Gaza. Okay, so एक तो अगर अगर ये ऐसे ही चलते रहे, अगर ये यही कार्य करते रहे जो ये कर रहे हैं, ओके, तो एक तो क्या होगा, इनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, जो ऑलरेडी खराब हो रहा है. ओके, साथ ही साथ ये मारते रहेंगे पैलेस्टीनियंस को, डिफेंसलेस पैलेस्टीनियंस को, जिनके पास कोई अपने आप को बचाने का कोई तरीका नहीं है, उनको बुरी तरह मार देंगे, उनको दे विल सराउंड देम, दे विल बॉम्ब देम, बेसिकली गाजा का पूरा हालत खराब कर देंगे. ओके, सो इसका कोई एंड नहीं है, इसका कुछ, इससे कुछ उनको हासिल नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रहा है. ओके, Mr. Netanyahu faces two choices. अब इनके पास दो choices हैं. Okay, Mr. Netanyahu, the Prime Minister of Israel, has two choices. Okay, he can take the message from the UNSC seriously. जो UNSC का मैसेज है उसको सीरियसली ले सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं वॉर, अलाउ अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, गाजा को अलाउ कर सकते हैं कि अब वहां पर बेचारे लोग जो फंसे हुए हैं, जो लोग दर्द और पीड़ा में है, जो लोग घरें बर्बाद हो गई हैं, उनको उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये कर सकते हैं. ओके, एंड कंटिन्यू टॉक्स विथ हमास थ्रू इंटरनेशनल मीडिएटर्स. ओके, और हमास से बात करवाते रह सकते हैं बाय इंटरनेशनल मीडिएटर्स, जैसे यूएस है. ओके, तो बात करवा सकते हैं. ओके, उनसे बात कर सकते हैं. ओके, दे कैन ओपन अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, रिलीज ऑल द हॉस्टेजेस, ताकि सारे हॉस्टेजेस, दोनों साइड के जितने भी हॉस्टेजेस हैं, सारे रिलीज कर दिए जाए और अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर सके. ये पूरे इनक्लेव से इनको अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए. ओके, वापस बुला लेना चाहिए. और दूसरा ऑप्शन ये है, ही कैन कंटिन्यू टू लीड दिस कंट्री इन अ डार्क इन द डार्क इन द डार्क इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट वॉर. ओके, या तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं अपने कंट्री को एक एक बहुत ही अंधेरे और परमानेंट वॉर के स्टेट में. ओके, so these are the two choices that he has. Okay, so what would be the tone of this editorial? सबसे पहले तो perturbed होगा, basically, which means concerned. उसके बाद what is the other tone? पहले आप टोन बताओ गुरनूर, टोन बताओ. Not cynical,
It can be acerbic. देखो जितने भी bitter tones है ना, acerbic, caustic, acerbic, okay, acrimonious, towards the Israeli Prime Minister, okay, and what he has been doing. All right. Mhm. Uh, Pessimistic भी हो सकता है. नहीं, but he has given two choices, okay? So pessimistic नहीं होगा. All right, so that is it for today. That is it for today. Thank you everyone for joining. Thank you everyone for attending the session so early in the morning. And I thank you all, especially Kev, who has made sentences, good sentences uh, today. All right. So I will see you again tomorrow for the Hindu editorial session. Please do not forget to watch the session and learn the words. Okay. Bye everyone. Take care. Auf Wiedersehen. Au revoir. Bye.